यो कोबरा भाई, क्या हाल है आपके? बहुत टाइम बाद। मेरे 10 मिनट में कमीशन खत्म करना है मुझे। 9 मिनट के अंदर कमीशन करना भूल गए हम। और ये कमीशन पता नहीं सुमेरू में कैसे शिफ्ट हो गया अपना। Illusion shattered. Wind striking. Clouds high. The birds call. जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई हमने विशेष करी कल। अरे 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 भाई हम थोड़ा सा था, मतलब अभी हम करेंगे अभी विशेष हमारा। लेकिन कल हम ऑलरेडी थोड़े दुख और दर्द से गुजर चुके हैं। कल हमने पिटी हिट करी 82 पे, है ना? गारंटेड नहीं था। और हमारा डी लोग C2 हो गया 85 की पिटी पे। कल भी किसी ने मुझे ऐसे ही बेस्ट ऑफ लक कहा था। अरे श्योर श्योर। अभी हम ना पहले क्या करेंगे, हम अपना पहले हमारी जो, अरे बहुत ही दुख की बात है भाई। 82 पे मतलब पहले पहले हार्ड में तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन फुल हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड, टाइटेनियम हार्ड पीटी पे पीटी हारना। अरे भाई श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। जी नहीं, लक बांटा जा रहा है। मुझे चाहिए, मुझे बहुत नीड है। मुझे अभी वेपन बैनर पे स्टाफ ऑफ होमा चाहिए, या फिर निवलेट का भी चलेगा मुझे। मुझे बुरा नहीं लगेगा निवलेट का वेपन पे। अगर निवलेट का वेपन निकलेगा तो फिर भाई मैं निवलेट निकाल दूंगा। और क्योंकि वेपन बैनर पे पेटी चल रही है ना 65, क्या बुरा है? मैं सो नहीं जा रहा था बस। अरे 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 अरे, थैंक यू। अभी विश कर रहे हैं? अरे मेरे पास अभी विशेष, अभी तो मेरे पास विशेष हो जाएंगी। एक सेकंड मैं देखता हूँ, एक सेकंड। पहले बात पेटी कितनी है मेरे पे? ओ वो इतने सारे। अभी हम कितनी विश कर सकते हैं? हम ऑलमोस्ट कर सकते हैं 4। एक उससे आ जाएगी, है ना? और अभी हम हम वो कलेक्ट करने जा रहे हैं प्रिमोजियम। अभी हम विश करेंगे, हम 6 विश करेंगे। हमारा वेपन बैनर पेटी हिट हो रही है, तो 65 की तो हो जाएगी। वेपन बैनर की तो पेटी देख के जाओ। एक तो सुमेरू के कमीशन इतने बुरे लगते हैं, पता नहीं उधर कैसे कट हो गए। हाँ। अरे वो कर लिया, वो 40 उसी के ही आए ना। वो इतने सारे मेल उसी के पड़े थे फेब्रुअरी के। बाय द वे थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। निवलेट, निवलेट वो आर्कन क्वेस्ट करी? आर्कन क्वेस्ट, ओ नया वाला इवेंट भी आ गया? क्या मतलब लॉगिन भी आ गया? लॉगिन आया क्या? नहीं अभी नहीं आया ना। हाँ आए।
40 नहीं, अच्छा जी 40 से ज्यादा प्रीमो जेम्स हैं। ओके मुझे, अच्छा ओके ओके, अब मुझे देखना पड़ेगा फिर तो। कॉन्क्वेस्ट कर लिया, क्या बात, सबने कर लिया कॉन्क्वेस्ट। अरे नहीं ब्रो, मैंने टाइनारी का भी कर लिया और एक बंदा और खड़ा था, मैंने उसका भी कर लिया। उन सबने बस ये खाने पीने का आइटम दे दिए, कर तो मैंने सबका दिया। आई थिंक मैंने सबका कर दिया, ये सब इतने सारे आए थे ना मेरे, सबसे पहले वो ही किया। ओके ओके, मैं भी वही करने वाला था स्ट्रीम पे। विश के बाद हम, कितना टाइम है हमारे पास, ओ 3 मिनट बचे हैं कमीशन जाने में, 3 मिनट तो बहुत है। हाँ हाँ ब्रो, थैंक्स थैंक्स, मैंने भी यही देखा जस्ट घड़ी में। अरे क्या बात, पहली बार हुआ है 3 मशरूम आ गए, पहली बार हुआ कि 3 मशरूम आ गए लगातार, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक। Add Astro. Thank you for अब मैं जल्दी से कमीशन स्विच कर लूं, वरना ये कल भी सुमेरु में आ जाएंगे। है ना, अब यहाँ से मिली एक विश मिलेगी मुझे यहाँ से। एक सेकंड, मेरे पास वो कितना है ना, वो सिजिल कितनी है मेरे पास, सिजिल 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 49 है, एक विश मिल जाएगी, एक विश मिलेगी, एक एक दो मिलती है। वो दो मिलती है। अरे मैं अभी वेबपेंट देखूंगा तो वो मेरा थोड़ा सा ये ना, मैंने लगा रखा है ना स्क्रीन रेशियो, वो बिगड़ जाएगा, वरना मुझे वो भी शायद मिल गई कैसे। और प्रिमोजिम कितना होता है, प्रिमोजिम भी हो गए ऑलमोस्ट 8 विशेज हो गई। अरे इधर से मिल जाएंगी एक तो, एक प्रिमोजिम तो यहाँ से मिल जाएगा हमें। 155 हो गए, नाइस। अरे अचीवमेंट्स, वी गॉट अचीवमेंट्स। अब हमारे पास 8 विशेज हो गई, अब हम कर सकते हैं। अजी नहीं, अर्जी नहीं। क्या बात, इसे कहते हैं टाइमिंग, इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती। 1:30 बज गए ना, इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती। 9 विशेज हो गई यार, क्या बात है वैसे। कमीशन आ गए, हाँ। यूट्यूब भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल है आपके। अभी हमारे पास 10। न्यूब्लेड का वेपन मिला, क्या बात है, कितने की पिटी पे निकला, और 50-50 था, मतलब वो बैनर वाला ही वेपन निकलना था या फिर स्टैंडर्ड भी निकल सकता था, यही था। अरे श्योर ब्रो, थैंक्स,
वो यकीन है, अब तो मुझे भी यकीन हो गया, मुझे भी यकीन नहीं था। हमारा लेकिन स्टाफ ऑफ होमा निकलेगा न्यूलेट भाई, देखना। वो न्यूलेट कह रहा हूँ, यूडीएम। 8 पीटी था, 50-50 था, 67। नाइस नाइस। मैं अभी, मेरी अभी 65 की चल रही है। 67 था, अच्छा नहीं, मेरी 55 की चल रही। हाँ हेलो, मेरे 65 हो जाएगी 10 फिश करती। क्या बकवास कर रहे हैं ये। अभी हम 10 फिश। बाय द वे, हम 82 की पेटी पे वो 50-50 हार गए डी लुक के साथ। हाँ, आप निबलेट ही तो हो। पावर नहीं देखा, पावर लेवल। आज ही नहीं, दो 10 फोन में 2 5 स्टार अब तो। सीधे गोदी में उठा के करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। वो पॉली। अब हमारा एक स्टाफ ऑफ होमो निकलेगा, एक लगेगा निबलेट का वेपन। अभी हमें उसका नाम नहीं पता, तो हम उसे निबलेट का वेपन ही बोलेंगे। लेट मी चेक उसका नाम क्या है। वो बहुत बड़ा नाम है, हम इधर बोल भी नहीं सकते। टोम ऑफ इटर्नल फ्लो। टोम ऑफ द इटर्नल फ्लो। भाई 87 नहीं हुई, 82 की पिटी पे हम हार गए 50-50 डी लुक के साथ। 82 की पिटी पे। अभी हम इस वजह से हम पहले वेपन पुल कर रहे हैं। नहीं, वैसे मैंने उस पर 40 की पिटी और बिल्ड कर ली है ना। उस वाले क्या नाम है, कैरेक्टर विश बैनर पे 40-50 की विश पिटी और है। लेकिन हम सोच रहे हैं हम पहले उसे ही निकाल लेते हैं एक वेपन को, तो हम सोच सकें कि हमें निबलेट निकालना है या फिर हमें हुटाओ निकलनी। यार C2 राइडन बहुत बहुत बैड है ऐसा, मतलब C2 राइडन का इतना हाई डैमेज है। मतलब बेस्ट डीपीएस कहते हैं C2 राइडन को गेम में। उसका मतलब 40% डिफेंस कम करना कम छोटी बात है क्या, मतलब 40% डिफेंस। मेरा तो बस काजुआ ही C2 हो पाया, वो भी बस किस्मत से, जिसे कहते हैं 110% किस्मत। ये दोनों बार में 50-50 जीत गया और एक बार अर्ली पिटी हिट कर ली। हाँ, बहुत ओपी कैरेक्टर है। और बाय द वे, तुमने वो देखा क्या नाम है जो ग्लिच है, कि ग्लिच नहीं मतलब मैकेनिक्स है कि लोग अपने माउस का डीपीआई बहुत हाई कर देते हैं, तो वो सबको ही मार देता है चारों तरफ। बाय, अरे 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 अरे, कोबरा भाई मैं आपको अपना लक दूंगा उस दिन जिस दिन काजुआ की रीरन आएगी। ओ वैसे गेम प्ले देखा उसका, क्या नाम है, फुरिनिया का लीक आ गई। आ गया, लाइट कहाँ गई। कितना सही लग रहा था ऐसे गेम प्ले। मैं कौन सा कह रहा हूँ काजुआ C2 करने को, मैं कह रहा हूँ कि काजुआ निकलना चाहिए। फुरिनिया का गेम प्ले बहुत मस्त है सर। उसने मतलब लिटरली ओशनोड की पावर दिखा दी उनके पास। अब 3-3 लोग हमारे साथ लड़ेंगे। और सबसे खतरनाक हुआ, उसे पानी पे चल सकती है वो स्किल यूज करके। बताओ, पानी पे चल सकती है वो। मतलब सांगनोमियर नर्फ कर दिया उन्होंने 100 टाइम्स उसके बर्स्ट में।
सामने में बस में चला करती थी। Time to go. Clouds high. The birds call. Add astro. Thank you for रेड प्रीमोस मिल सकता है हमें कहीं से इस वाले इवेंट। ये वाला इवेंट कोई लंबा सा ना हो तो हमें ये इवेंट लंबा तो नहीं है या लंबा है? कि मुझे जल्दी से 160 प्रीमोजियम दे दें ये। बाय द वे मैंने अपने मुझे चाहिए हमें 10 की। क्या डैम ट्रू ट्रू भाई। दे देना वर्थ इट है भाई, दे देना। C2 के लिए कम से कम 2 वर्जन के बैनर स्किप करने पड़ेंगे C2 के लिए। उसमें भी एक किस्मत अच्छी होनी चाहिए अगर तुम्हारी पीटी गारंटेड नहीं है तो। स्किप इम्पैक्ट। ओके 60 चलो हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। और आई हैव रेडियन नेशनल मस्त है। मैं मेरे लिए भी बड़े रहा तो मैं भी हाइपर ब्लूम यूज करता हूँ स्टाइलस में। लेकिन हाँ कि हमें चाहिए भी सारे करेक्टर। नहीं नहीं अभी ऐसे बातें नहीं करा करते। अभी हम 10 पेश करने वाले हैं, देखो तुम ऐसे मुझको डिमोटिवेट कर। वैसे हमारा 2 5 स्टार निकलने वाले हैं वैसे भी। कैसे रहा ये? वो हमारे पीछे पंख कैसे आ रहे हैं ये? यस नेक्स्ट का ऑप्शन है। लेकिन आया था मेरी फर्स्ट 5 स्टार एट 13 एडवेंचर एंड इजीली मिली थी बहुत ज्यादा। लेकिन यार तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा होगा जब तुम्हारी 13 AR पे आया का मिल गई तो तुम्हें उसे अपग्रेड करने के लिए पूरा वहां तक आना पड़ा होगा। क्या नाम है इनाजुमा तक पूरी 32 एडवेंचर रैंक करके
क्योंकि तभी ना जूम खुलता है 32 एडवेंचर रैंक पे। ये ना बहुत बड़ा इशू है इनका, बहुत तगड़ी। ज्यादा दूर नहीं हो गया? उल्ट गलत नेविगेट कर रखा है मैंने, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सोचा हूँ बहुत दूर हो गया है यार। ये तो पास में ही था। हाँ तुम आपने वो बताए थे ना, स्टैट्स बताए थे, बहुत सही थे उसके। मतलब बिना वेपन के 193% क्रिट डैमेज था, क्रिट रेट भी 34% था शायद से। मैं गलत जा रहा हूँ क्या? हाँ मैं गलत जा रहा हूँ। 42-35 ओके। फिर तो यार ये तो मेरे वाले से ही बहुत तगड़ा है, मतलब कि इतना तो मेरे का भी नहीं है। मैंने दिखाया। फिर तो खत्म भाई, फिर तो खत्म। हाँ मतलब बहुत सही है भाई ये। विश करते हैं, हमारा विश हो गई सफिशिएंट। अच्छा कलेक्ट भी तो करनी होती है भाई, कलेक्ट भी तो करनी होती है। पिंग हाई चल रहा है। चलो ओ डन। क्या वो हुटाओ का वेपन आ रहा है? ओ ये बात। नहीं नहीं, एक 5 स्टार आ रहा है ना, एक तारा कम रह गया। इजी इजी। कोरा भाई ने बहुत बड़ी हेल्प करी हमारी आज लक में। मिल गया भाई निकली। अब हम भी इधर खूब टॉप पुल कर सकते हैं बिना किसी चिंता करे। आ, मे- कहा था। आई नो ब्रो, आई नो। द फुल क्रेडिट गोस टू यू। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं उम्मीद खो चुका था। जस्ट फॉर योर सेक हम दो विश और कर लेते हैं सिंपल बैनर पे। इसमें वही वही ना हमारा एक 5 स्टार तो निकल जाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे तो लग गया था एक बारी वो गोल्डन था। ऐसा एक विश नहीं मिल गई, विश आ गई, रिफंड आ गया हमारा। एक विश का नहीं यार, रिफंड। और एक और गोल्डन। इतना अच्छा नहीं है भाई किस्मत। अच्छा एक एक विश और है। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो भाई गारंटीड है, उठाओ, मुझे टेंशन नहीं है अब। गारंटीड है ना, कर लेंगे हिट।
कोई बड़ी बात है? बहुत टाइम है बैनर जाने में। हाँ सीरियसली मुझे भी लग गया था भाई, सच्ची में सेम। मैं सोचा भाई कितना है, कितनी चल रही है पटी? 8 5 तो 40 चल रही थी, 43 विशेष कर ली हमने, आराम से कर ली। फाइल अभी इसका बाहर, फाइल अभी कब रीसेट हो रहा है हमारा? अभी तो बहुत 2 दिन है, अभी तो बहुत टाइम है। अपने फेवरेट कैरेक्टर के पास उसका वेपन पहुंच जाए, कितनी खुशी मिलती है। ड्रैगन में ये क्या होता है? स्टाफ। अनफॉर्चुनेटली मेरे, भाई मेरी मानो। अच्छा ठीक है भाई, अगली मैं 10 फिश सेव करती ही मैं करूंगा, फॉर श्योर। मैं 10 भी करता हूँ ऐसे, लेकिन वो जस्ट वो थोड़ा लक का वो होता है ना, एड्रेनलिन चढ़ा हुआ था हमारे अंदर, है ना, तो चलो मार देते हैं 2 फिश भी। देखो मेरे पास है मटेरियल लेके 90 करने के। बहुत ही रेयर चांस है इसका होने का। एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली एक्साइटमेंट में। अरे कोई बात नहीं भाई, आईपो को ठीक नहीं लगा करते हैं। We are getting close, we are getting close. अरे 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 जरूर भाई। 10 फूल में वो तो अलग लेवल है भाई अपना, वो उसकी टक्कर नहीं ले सकते हम। आई डोंट नो आपने कौन सी प्रार्थना है, और तो कहाँ पे आप हिमालय पे जाके आप कितने टाइम तक बैठे रहे थे कि 10 फूल में आपका निकल जाए, वो भी इतनी कम की बुटी में। वी कैन क्राफ्ट दिस, वी कैन क्राफ्ट दिस, वी कैन क्राफ्ट दिस। वो 90 का निकल पाएंगे यार हम ऐसे तो, मुझे तो लग रहा है 90 का मुश्किल है। तो मुश्किल है क्योंकि गोल्डन वाला मांगेगा, और गोल्डन वाले पास हमारे घोड़े नहीं होंगे। ओके भाई, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। हम्म, मैंने टीम में भी नहीं लगाया है। वही चमकता है, ये चमकता है, मेरी एचपी कम है तो। मैंने पहली बार देखा। वेपन की, हाँ 2 दिन पड़े हैं मेरे पे, मैं जा रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि हो सकता है नहीं हो सकता। ये भाई, ये मेरे ख्याल से ये शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा होगा कि जब उसने उस बंद उस वो चीज उस करेक्टर उस वेपन पे पुल किया हो और उसका मटेरियल हो उस दिन। मेरे साथ आज तक नहीं हुआ भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं कि
शायद ही किसी के साथ हुआ क्योंकि उस दिन उसका वो था, डोमेन था। ये क्या आ रहा है मेरे पास? अच्छा, रोदारिया की कॉन्स्टलेशन निकल चुकी है। Sun's out, bathe in sun. हाँ 70 का हो गया। इसमें वो लुक आ गया ना चमकने वाला। हमने देख लिया। हाँ तो 67 तो हमारे भी वो 67 पे निकला हमारा। मेरे को दिखाओ अपनी आयका का रेशियो। भाई मेरी आयका का रेशियो दिखाने लायक नहीं है। हाँ वही है भाई, जब तुम वोटेक्स निकला तुम्हारा डोमेन नहीं था, अब मेरा भी डोमेन नहीं है। 223 70 का। तुम्हारा कितने था? एक सेकंड मैं देखूं ऊपर चैट में। 4235। मेरा मेरा A 223। blade embraces its duty, as a jeweler इवन विद cherishes their वेपन, gems. इवन विद वेपन क्या फायदा है? तुमने अटैक परसेंटेज का वेपन देखे, अटैक परसेंटेज का क्या फायदा? टैलेंट ट्रिपल क्राउन कैरेक्टर होने का सही है भाई। जब तक सही लगता है, जब तक दिखाओ ना कि भाई ये तो वेपन भी निकला हुआ है, तब ऐसा रेशियो है। अरे भाई 235 के अगर आसपास भी है तो बहुत सही है। 220 225। अच्छा हाँ, मेरी मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो ना। सेकंड लेट मी सी। मैं नाम भूल गया हूँ भाई। सेकंड नहीं हो क्या? 854508 120। एग्जैक्ट 235। एग्जैक्ट 235। है मैं पे भाई मैं पे। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ये देता क्या है? फिर डैमेज टाइप। डैम ब्रो, क्रायो डैमेज बोनस। मैंने आया वो रेडियन में क्राउन बच किया है। प्रॉबिलिटी यार तुम्हारा बड़ा सही है। मतलब एक तो पहली बात ये उसका ही है, मतलब सेट का पार्ट है, और सेट का पार्ट है ऊपर से सब स्टैट इतने बढ़िया हैं। नाइस, क्रिट रेट निकल गया तो और क्या चाहिए। ये तो मास्टरी है भाई, मास्टरी। ये तो पीस ऑफ आर्ट है, ये तो पीस ऑफ आर्ट कहते हैं बेसिकली। इधर हम पीस ऑफ आर्ट। एक सेकंड, इसका 40 सीबी से ज्यादा है। 40 जीबी भाई, बहुत सही। मेरे पास एक ही आर्टिफैक्ट है। एक ही आर्टिफैक्ट है मेरे पास पूरे गेम में जो 40 सीबी क्रॉस करता है। वो
भी होटा हुआ ही है, लेकिन भाई ये है 20 कितना परफेक्ट दिख रहा है। 20% क्रिटिकल डैमेज, 10% क्रिट रेट, और बाकी दो स्टैट्स भी अच्छे हैं, डिफेंस के नहीं है। डिसेंट है भाई, बहुत सही है। तो चेंज करने की क्या जरूरत है भाई, अब फिर तुम कहाँ पहुंचाओगे अपनी आईएफओ को? ऑब्वियसली ये तो भाई सीवी क्या होता है? सीवी बोलते हैं भाई क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट होती है, एक सेकेंड, क्रिटिकल वैल्यू होती है कि क्रिट डैमेज प्लस क्रिट रेट इंटू 2, मतलब क्रिट रेट का ट्वाइस। सेकेंड, ये बेसिक फॉर्मूला होता है सीवी का, है ना? तो इससे क्या होता है कि अगर तुम्हारा सीवी, क्या नाम है उसका, है 30 से, मतलब ऐसे होता है कि जब वो 20 से ऊपर है ना, तो वो डिसेंट है, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40 होता है बहुत बढ़िया भाई, जिसे कहते हैं गजब, है ना? मतलब अब 30 से 40 भी अच्छा, मतलब नहीं, 30 से 40 होता है वेरी गुड, है ना? 20 से 30 डिसेंट होता है ना? और 20 से 30 एवरेज होता है। लेकिन हाँ, 40 एवरेज, 40 होता है भाई, मतलब सबसे बढ़िया, मतलब मतलब जो होते हैं आर्टिफैक्ट। अब 50 सीबी क्रॉस कर सकते हो तुम गेम में। 50 सीबी क्रॉस करना लोगों के होता है, बहुत चीजें कहते हैं कि साल में किसी का निकलता होगा 50 सीबी क्रॉस करता हो आर्टिफैक्ट, है ना? 50 सीबी क्रॉस करना, 50 सीबी पे ना एक रेडिट पे डालना, रेडिट पे मिल जाएगा तुम्हें, सीवी सर्च करना, जेंशिन इम्पैक्ट सीवी, तो एक पोस्ट मिलेगी, उसने सही से ग्राफ बना रखा है। तो उसमें उसमें लिख रखा है 50 सीवी पे क्रॉस करने पे यूनिकॉर्न डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि वो फिजिकली होना बहुत ही मुश्किल है। सर्कुलेट पे देखो, 15% क्रिट रेट, 15। You should definitely pull for a weapon. Definitely. ओ, अगला स्पाइरल बड़ा खतरनाक आ रहा है, मैंने देखा लीक्स में। लीक्स, जिसे कहते हैं ना खतरनाक इन दी खतरनाक सेंस वाला खतरनाक। हाँ भाई दिख रहा है। मैं अगर तुम बोलते ना मेरे रोल्स बहुत बेकार गए थे, तो मैं यकीन भी नहीं करता। जब बढ़िया गए हैं तभी इतने बढ़िया आर्टिफैक्ट है। इधर आ रहा है मिशन हेलीकॉप्टर। मैंने 100% कर ली थी, पता है, अपडेट आने से पहले एक्सप्लोरेशन पूरी यहाँ की। मेरा ये मिल भी नहीं सकता कहीं से। जॉन्गली विदाउट एनी स्टैट बोनस 40 के मार रहा है बर्स्ट पे। मतलब स्टैट्स बोनस मतलब, अच्छा बिना आर्टिफैक्ट का सब एनीथिंग एल्स, है ना?
मतलब बिना आर्टिफैक्ट के मार रहा है ना, ये बिना किसी और चीज के। वो यार ये तो 40 के मार रहा है बस्ट पे। लेकिन ब्रो आई स्टिल स्टिल थिंक कि शील्ड्स ओनली थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इससे। अच्छा बिना आर्टिफैक्ट साइड बोनस के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइड बोनस पर आर्टिफैक्ट दे रखे हैं, आर्टिफैक्ट दे रखे हैं। क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूँ जोंगली वो खाली शील्ड ही लगाए तो ज्यादा सही है। जैसे कहते हैं ना ऑन फील्ड टाइम टू डैमेज रेशियो वो हाई होना चाहिए, मतलब कि आपका कैरेक्टर फील्ड पे कितना वो कितना डैमेज दे रहा है। तो वैसे हाँ ये है कि जोंगली बस 1 सेकंड के लिए फील्ड पे आएगा, वो 200 के मार के चला जाएगा अपने बस से 1 सेकंड के अंदर। क्योंकि भाई अब ना एनिमीज आने लगे हैं जो शील्ड तोड़ देते हैं मेरे भी जोंगली की, इतने स्ट्रॉन्ग। हमारे जोंगली की जब 22,000 एचपी होगी तो भाई वो तो फेंक के फेंक देंगे कैरेक्टर को बीच में से शील्ड के। हाँ शील्ड का बोनस बढ़ जाता है, ये बात है। मतलब शील्ड की अब ऑब्वियसली हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो होगी। अगर मैं 22 के एचपी का जोंगली चलाऊंगा, तुम 22 के एचपी का जोंगली चलाओगे, तो हाँ तुम्हारा ज्यादा वर्थ है। टेस्टेड ब्रो। अब ऐसी चीज तो है नहीं कि तुमने बना दिया तो तुम चेंज नहीं कर पाओगे। मेरा एक दोस्त था वो भी ये वाला जोंगली चलाता था, फैमिली जोंगली। इवन उसने अपनी आईडी का नाम भी जोंगली रख रखा था। तो मुझे बताता था कि उसने 350 के हिट कर लिया, 400 के हिट कर लिया जोंगली से। अभी हिस्ट्री नहीं आई होगी ना यार, हिस्ट्री देखनी थी मुझे यार अपनी। अरे तुमने इसे भर क्यों नहीं रखा, इसे भरो तो सही यार। क्या नाम है, मैंने फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना भूल गया मैं। एचपी जोंगली पे भी ब्लैक टेरल की जगह वॉर्टेक्स की रखूंगा। ओके नाइस। ब्लैक टेरल बेसिकली करता क्या है, कितने परसेंट एचपी दे देता है? ये देता है 46% एचपी दे देता है। और 46% एचपी कितनी शील्ड की बढ़ाती है? 23% ऑफ द मैक्स एचपी। हाँ तो भाई फिर वॉटेक्स सही है उससे। फिर वॉटेक्स हाँ मतलब डैमेज भी आएगा, थोड़ा सा मतलब एचपी भी स्ट्रांग रहेगी बहुत। जब इसमें ऑब्जॉर्प्शन ही 23% ऑफ द मैक्स एचपी है, तो वो 43% का 23% ले रही है। ये मतलब थोड़ी रफ कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होने हैं। लेकिन हाँ बस थोड़ा ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं कि हाँ ठीक रहेगा। मुझे इसे भी C3 करना है, वो लोग क्राउन करना है मुझे इस कैरेक्टर को भी। मैंने बस यूला को कर रखा है और आयाका को कर रखा है। और मैंने शायद कर रखा है रेडन का बस्ट कर रखा है। और नहीं की स्किल कर रखी है। और इसकी एलान की भी कर रखी है। और वेंटी का भी कर रखा है मैंने। वेंटी वेयर आ रही हो? वेंटी का भी बस्ट कर रखा है। बस्ट तो मैंने बहुत कैरेक्टर से कर रखा है। मैंने मैंने साइनो का बस्ट और स्किल कर रखी है। सबसे बेकार कैरेक्टर है मेरे गेम का ये, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे खेलना।
जी। मतलब बहुत वेस्ट कैरेक्टर है ये, मतलब सीरियसली। एक तो ना इसका डैमेज आता है, ना ये सपोर्ट है, लेकिन स्टिल इट्स अ फन टू प्ले। या ब्रो सीरियसली, एक ना लेवल होता है, एक जैसे जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें कि अगर, हाँ तुम 5 स्टार ही निकालो, क्योंकि भाई अगर तुम मेटा के पीछे जाओगे ना, मेटा के पीछे, तो भाई तुम ना जल्दी गेम से बर्न आउट हो जाओगे, तुम छोड़ दोगे, तुम AR60 या AR59 भी नहीं देखोगे। सीरियस, क्योंकि ना जो लोग मेटा के पीछे जाते हैं ना, जो अपने पसंद के करेक्टर्स नहीं निकालते, जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स निकालते हैं, वो फिर बर्न आउट हो जाते हैं। वो करेक्टर्स निकालो जो खेलने में अच्छे हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। कभी कभार निकाल लो ऐसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स, और फिर तुम्हारे पास लगे कि भाई अब मुझे करेक्टर्स नहीं चाहिए, अब तो मुझे इनके कॉन्स्टेलेशन या सिग्नेचर वेपन्स चाहिए, तो तुम्हें स्विच करना चाहिए। जैसे अब मैं जैसे बताऊँ ना, जैसे फन टू प्ले कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे वॉन्डर। वॉन्डर बहुत होती है ना, लेकिन भाई वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसे आयाका की जगह लेके जाऊं या यूला की जगह लेके जाऊं। वो अच्छा है डैमेज डीलर, लेकिन वो दूसरों से स्ट्रांग नहीं है ना, लेकिन हाँ वो फन टू प्ले है। तो भाई कादुआ भी बहुत फन टू प्ले है भाई। तो यही है ना भाई, जौन सा तुम्हें करेक्टर अच्छा लगे ना वो निकालो। कादुआ खेलने में भी बहुत मजा आता है, खासकर ऐसे सिचुएशंस में। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि अब तो खासकर ये वाला आ गया है गैजेट, हम कहीं भी जा सकते हैं। भाई कादुआ निकालो तुम, कॉन्स्टलेशन आती रहेंगी, बहुत टाइम है कॉन्स्टलेशन की। मैं भी शायद कोटा की कॉन्स्टलेशन नहीं निकालता, जब अगर मुझे वो निबलेट चाहिए होता तो, क्योंकि ब्रो तुम बर्न आउट हो जाओगे फिर जल्दी। बोलिए सबके ओपिनियन अलग होते हैं ना, कि तुम्हें कौन सा करेक्टर फन टू प्ले लगे वो मुझे ना लगे। Time to go. जैसे लोगों को याई मेरे को बहुत सही लगती है खेलना, उसकी स्किल की वजह से, कि उसके स्किल यूज करने पे कोई टेंशन नहीं रहती गेम में। Fresh fruit, sweeter than syrup. अच्छा अच्छा अच्छा, वेलकिन स्टैक कर लिया तुमने 192 डेज का। कोई नहीं भाई, वेलकिन ही तो स्टैक किया है, पास थोड़ी किया है। अब पता है वेलकिन के जो वो मिलेंगे ना, क्या नाम है, उनसे तुम स्किन लेना। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अगर जोंगली ले, मतलब सारे खर्चो अब तुम ना जोंगली के लिए बचा के रखना, वो वाले, वो जोंगली कह रहा हूँ यार, स्किन्स के लिए, स्किन्स, स्किन्स, अब जो स्किन्स आने वाली है, ये कहाँ आती है स्किन्स, आउटफिट्स, ये जब सस्ती आती हैं गेम में, उस टाइम पे। तो ये अगली कोई 5 स्टार स्किन आई तो तुम तैयार रहोगे।
बस चलो भाई जाओ, सुने, गुड नाइट, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Furina. We're going to pull over him. Yeah. Yep, here's the room, and it's empty and waiting for us as promised. Navia is such a good person. वहीं पे कंटिन्यू हो रही है The स्टोरी. serial disappearances case has been solved. No one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. सिलेंडर पॉट नहीं है इनके पास. Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Oh, fine, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Whew. It's actually pretty good. No! Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? कितनी सही बात. A blonde traveler and a chatty little fairy. Phew, looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilette wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nouvelette? He wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourilette in person. उससे रिन्यूअल If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. shiny in the depth. Octa-core. I guess I finally.
There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Guess I'm finally on the right path. Time to go. My research had so much potential. Finally on the right path. You're most certainly correct. चलो हम निवलित के पास चलते हैं। निवलित कहाँ मिलने वाला था हमें? कोर्ट फॉन्टेन में। यहीं बैठता है निवलित। We're here! Did you want to see us about something? Huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. Obviously. You दोनों should में wait पता until है। after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this.
It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, ये बिगाड़ देगी. we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating. It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Toxic Though friendship इनकी. diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yeah. yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, ये you'll basically be कह रही at है the जो meeting. होगा देखा जाएगा. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. वही. Look, I am the Hydro-Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Though Okay. it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? The fourth of the 11th for 2000. Fourth जबकि वो था Wanderer. देख रहे हो? इन्होंने अपग्रेड कर दिया. Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand.
The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Udex Nouvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? Well, Lenny did say that Father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meripede. Is
I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, are you two willing to accept my proposal? Dark options are. Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. We will rendezvous at the Fortress of Meripede's entrance on Erenius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. मिलना चाहिए तो मैं सच्ची में Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Your Are you treat. leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. केक उठा लिया हमने और हमें करना go to Buffalo Run. Okay, the door teleportation. Good evening. Hello. मैं क्लिक करनी थी अब वो I'll have that, and that. Oh, and one of those too. Ooh, and no Fanta, thank you. That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the Fortress of Meripede. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Oh,
Oh, what is that I hear? Is it the taste of a breaking story? भाई सब ये हर चीज सुनती रहती है. Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. ये बोल जाती है ये जर्नलिस्ट है, डिटेक्टिव नहीं है. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Maripede. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. No way! We would never! We're just going there to... Oh no, Paimon almost forgot that Neuvillette told us to keep it a secret! Huh? You're being arrested for that? Oh, but now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable, almost as offensive as committing theft. ओ भाई. You mean Paimon really did something that serious? Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right, there's still a chance. Since you're going to be at the fortress of... About that, Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. मतलब ये ऐसा होता होगा कि ये ना इन्हें एक्साइल कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए और फिर ये आ सकते हैं फाउंटेन वापस से. एक्साइल का मतलब निकाल देना होता है ना फाउंटेन से. हाँ निकाल देना मतलब बेसिकली आना वाला क्या. तो वहाँ पे वो सब मिलके वहीं रहते होंगे उन्हें खाना पीना. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free, so this meal is on me. Alright, you got a deal. We'll do anything you want. भाई ट्रैवलर के आगे. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? You prepared. Paimon's so full. Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. ये बोल रही थी नीचे जाना है क्या? क्या सीन है? भागते हुए जाना पड़ेगा वो. अभी वो लगता है तेज दौड़. ये वाले बंदे की चैट देखो जब हमारा पर्पल निकला था ना. हैं यहाँ पे हाँ तो वो पर्पल आ गया था. ये को सेंटर में भेजने का टेलीपोर्ट करेगा क्या हमें? हाँ तो मैं बता देना. ये तो टेलीपोर्ट करने वाला है. जैसे पानी के अंदर है वो इसके बीच में सेंटर से नहीं इसके नीचे जाते होंगे मैं इससे. You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Maripede from Irenaeus. Careful. You may want to step back a bit. Whoa! So you have to go down from here? Is
underwater? अरे परवीन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। C1 तो नहीं आया ब्रो, लेकिन हमारे पास स्टाफ ऑफ होम आ गया, क्योंकि तुमने कहा था कि हमें पहले वेपन बैनर पुल करना चाहिए था, तो हमने आज वेपन बैनर पुल किया कि जस्ट इन केस अगर हमारा नेवलेट का वेपन निकल जाता तो हम नेवलेट निकाल लेते, लेकिन हमारा स्टाफ ऑफ होम निकल गया। 67 की पिटी पे 67 की पिटी पे हमारा स्टाफ ऑफ होम निकला आज। तो हम कब C1 करेंगे? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have कल of की the 10 की depths, 10। the fortress of Meripede is थैंक यू ब्रो, naturally थैंक the यू। perfect place to confine and guard criminals. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे होगा ये प्रिजन। But do not worry, it is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Wriothesley. ये बंदा भी बहुत He's a मस्त गेम very प्ले है इसका। shrewd fellow. Yeah, we heard about लेकिन it अगली too. आर्कॉन भी आ रही है, He's that उसका गेम प्ले भी आ dude, गया। right? गेम प्ले मस्त है तो Correct. उसका। He is the highest-ranking manager of the underwater ओके prison. ब्रो, आई विल शो यू। Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any अरे confrontation वो with 80 him का or नहीं, any मतलब of his 90 का नहीं हो subordinates. पाया ब्रो। The Duke एक्चुअली rarely ever leaves the मेरे पास fortress of उसके Meripede. मटेरियल थे That नहीं, does not mean he is not privy to all that is happening और inside and उसका outside the डोमेन नहीं है fortress. ऑब्वियसली। He is ऐसा तो quiet, कभी हो ही नहीं but सकता not कि unaware. So please इसलिए bear मैंने that in डायरेक्ट छोड़ mind. दिया। All right. It's about all the time that we have to talk privately. I'm counting. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest Monsieur convicts, I Nervalet. presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for... Continuing में कौन सा part of the forest become okay, ये नई चीज आई है unfinished oh भाई साहब। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This अच्छा blade, मतलब कोई it is the last link I have to the land of my birth. उठाओ के अभी हमारे स्टैट्स पहुंचे हैं 61 250 और अभी वेपन हमारा 70 लेवल का है। ये वेडनेसडे सैटरडे संडे तो बेसिकली कल आएगा अभी ये। हम इधर 90 का देख पाएंगे। एक चीज मुझे पता चली कि भयंकर ये चमकता है, देखो जब इसकी एचपी कम होती है उठाओ की चमकता है, इतना ज्यादा चमक रहा है वो भी, जैसे ये सब भी चमकते हैं। क्या नाम है, मिस स्प्लिटर रिफोर्स, लेकिन इतना नहीं चमकते। पूरी की पूरी आँख ही चमक रही है उसकी। नहीं ऐसे नहीं जाना हमें, तो हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो लिफ्ट नहीं है ये, तो लिफ्ट ही है। अभी हो जाएगा इसका 260 हो जाएगा, 260 होगा मैक्सिमम डैमेज। One with nature. अरे ग्लिच हो गए हम तो। Are we already underwater now? तो ये Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. हाँ भाई थिंक, हाँ भाई You 260 two 60 का seem to be किट रेट taking this pretty well. बहुत है। It's rare to see convicts in such a good mood.
It will be तुम्हारा भी सेम यही केस होगा अगर तुम्हारा वो निकल जाए मिस्पिटर रिफोर्स्ड, फिर तुम्हारे आयका के भी आर्टिफैक्ट बहुत सही हैं। Time to go. पीछे पीछे टेस्ट पड़ा हुआ है क्यूरियस होता है ना जनरली। ये पानी के अंदर वाटर नहीं जा सकते होंगे हम। इसका क्या एकदम जैसा सीन है मेरे ख्याल से इस वाले मैप का। नहीं नहीं इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। मुझे लगा था अलग मैप खुलेगा। अभी पकाएंगे यहाँ से थोड़ा सा। It's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a बात है, point. बात तो सही है, बात तो सही है। Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Okay, let me see. You are the Traveler and Paimon, correct? That's right. Let me confirm your charges and sentence. क्या sentence लगाए Let's होंगे? see. Eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days. 45 days. Huh? Wait, you mean the cake that क्या plan है? Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable खा of लिया causing मैंने some serious trouble. And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon वो भाई वो। herself. ऐसे नहीं है Now भाई I've वो seen criminal। everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. रोशनी से लगा रखा। तो ये हाइट का स्केल है नहीं है? हाइट नहीं माप रही है। और फोटो खिंचा रहे हैं ये, वरना पाइमोन का भी वेस्ट हो जाता। मुझे डाउट होता है कि ये हमसे ही कह देते कि फोटो खींचने को। ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दी थी फोटो। And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay. Paimon is Paimon and this is the Traveler. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. बहुत बड़ा है। अब होगी वो क्या तुम जैसी जगह थोड़ी सी मेरे ख्याल से। नहीं ऐसा तो बोलता था क्योंकि इस जगह की एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए ना, वैसे मेरे ख्याल से थोड़ी सी। एक्सप्लोरेशन। So,
है ना, तो और फिर हम उस जगह की ऑलरेडी 100% कर चुके हैं। अब इन्होंने वहीं Is there टेलीपोर्ट कर anything दिया we वो should तो be 2 careful आइलैंड है। of while we're here? हो सकता है। Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora! Wait, no. Coupons? Almost there. I It's down really through here. great time Your turn to give it request. a हाँ try. भाई। अच्छा जी, 5 घंटे लगे होंगे भाई। हाँ मतलब कुछ चीजें जो फालतू की बकवास चल रही है तो वो बहुत टायरिंग हो जाती है, लेकिन मैं कहाँ जगह ये ओके, ये उधर ही ले गए। थोड़ा इलॉजिकल था ज़्यादा दूर नहीं आ गए हम। ये तो हम नीचे से देख सकते होंगे शीशे को। पता है आपको वो So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Windstrider. अभी हम रोशनी तो यहाँ भी आ रही है जबकि हम बहुत So नीचे हैं। this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? कौन है ये?
मीडियम नहीं भाई यार, कंक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी। ये ना पता है ये इस वाली यार कंक्वेस्ट में तो होता है उसका हाइड्रोडाइन का न्यूक्लियर का कोई सीन नहीं दिखाएंगे अभी ना, आगे दिखाएंगे ये अगले वाली में जहां तक मुझे लगता है। और फुरने पक्का डर रही है शायद नया की उससे, वही तो सीन है। अब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से ये क्वेस्ट आगे, जहाँ हम ये फालतू के काम छोड़ दें तो। अब लेकिन अभी चलेंगे। एक सेकंड मैं अभी चालू करता हूँ, एक सेकंड मैं कुछ कर रहा हूँ, पता चलेगा आगे में। ओके ओके सस्पेंसफुल। ये बताओ कि आप पिछले वाली से बेटर है या पिछले वाली से बेकार है वाली आर्कन क्वेस्ट? यार विकली का गेम प्ले बहुत सही लगता है मुझे, उसका मुंह मुक्का लगता है। बस मेरा पेशेंस तो टूट गया था ज्यादा अच्छा जी भाई, तो तुम तो मतलब बहुत बोरिंग होने वाली है, तुम तो ऐसे बता रहे हो। ऐसे तो Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like अब criminals हम to ऐसे get लगेगा by. हमें आगे कमीशन करने पे If we're मोरा की जगह discovered, कूपन मिल रहा है, even Neverlet और might यहाँ not भी be लोग हमसे able to झाड़ू लगवा rescue रहे हैं। us. एकदम यहाँ तो वैसे भी झाड़ू लगवाएंगे हमसे। Don't scare Paimon. Pamon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. क्या बात करो, अब तो इंटरेस्ट जागा मेरा What was लास्ट में that जो all जो about? वाला सीन। Wait a second. Are there usually so many garden wrecks around here? They're already onto us? Prisoners number लिया क्या? 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world इसी as वाली you में might अगली वाली imagine. में? However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice.
quite fair. The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? कौन सा weather? Oh, सही बात है. greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the Fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, I just... अच्छा पूरी आंखें फर्स्ट हैंड में मतलब सेकंड की लास्ट में. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? नहीं बोलते अच्छा बन रही है. Outstanding. Well, ऐसे Deacon, नहीं है. I recall we discussed fate during our last work meeting. कोई तो हमें रहना है ना यहाँ I पे वैसे believe भी. that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. पुश कर दिया हमने. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. He's going to personally give us a cure? Oh my god. Paimon can't figure out what this guy's thinking at कमाई all. चला करेगी प्रिजन में जिसे कहते हैं. लोग No सलाम wonder वलाम. Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. अच्छा मैंने घबरा दिया उसको. ओह ऐसा दूसरा ऑप्शन में चेंज हो जाता होगा. The best of movies. ओह बहुत बुरा किया आप, बहुत बुरा. वैसे भी आगे इन्होंने में मुझे लगता नहीं है कि आगे कोई ऐसा सीन आएगा जहाँ पे ये हमें जान बचा लेगा या फिर हमारी क्वेस्ट इजी करेगा. बहुत बहुत रेयर चांसेस ऐसा होने के. लड़ तो सकते नहीं. यस. There's no need to be यार so ये पता है उस reserved. वाली जगह से ज़्यादा अच्छा The है. label of criminal is वो nothing जहाँ पे but one of लड्डू many क्या जो भी नाम है identities, उसका. and being वो रहता criminally है. inclined here at the fortress is just one Yeah, of वो many लेकिन ways अभी to है. हाँ survive. नाविया रहती है. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. जिंदा भी तो रखना है basically इनका That's मतलब. not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule.
इस ग्रेस Now बुलाते हैं everyone gets a square meal मतलब every इस day, ग्रेस को कैसे उसे even कहते no हैं good एहसान slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. बस बिग बॉस का घर ही तो है टेक्निकली देखा जाए तो No, we shouldn't drop our guard so quickly. 7,000 लोग It हाँ seems बस the 7,000 inmates लोगों से really respect the और Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. और 2-3 गार्ड के साथ और थोड़ी बुलीनेस है बुली तो बिग बॉस भी करता है Time to go. क्या आइकन आ रहे हैं ये इतने सारे वो द ड्यूक्स ऑफिस वो हो कितना मस्त आइकन बना रखा है इसका This place is known as the Pancration Ring. लड़ते होंगे यहाँ पे Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? अरे आज I तो हम must warn you मिलियनर हो that your जाएंगे sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing ये your तो वाला opponent. बात है तो हम तो जिंदगी भर यहीं रह जाएंगे So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? सट्टेबाजी होती है मतलब बल्कि बैटिंग होती है यहाँ पे Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we could start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. अब देखो इन्हें हमें इतना तगड़ा इंट्रोडक्शन कराने की जगह जरूरत नहीं थी खैर घर की लगा था चाइल्ड इसके अंदर ही बैठा हुआ होगा वैसे पक्का पेनिट्रेशन एरिया के इसलिए इंट्रोड्यूस कराई है उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा ऊपर कैसे जाना है अच्छा उधर से ही जाना था शायद what लग रहा है ये
Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies, Your Grace. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry, forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Maripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to डेली कमीशन अब वैसा आएंगे The fact that the Fortress of Maripede has continued operating आर्मी क्वेस्ट completely करके हो जाएंगे मेरे ख्याल autonomously से is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a मैं तो stable कर ली तो income. मुझे मिलेंगे नहीं As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of बनाते हैं Maripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Let's move on. The tour continues over this way. वो ये भाई गलत उस वाले क्राइम की वजह से कि इन्होंने नीचे चले गए थे ना ये वो उसका ये तो awesome moment हो गया वो You really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. मेरे इसने फादर ने भेजा होगा इसे लेने को फादर वो ये जो हमें ट्रेलर में दिखी थी Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concerns. Unfortunately for you. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sigewin here is the Fortress of Maripede's head nurse. हीलर है ये पहले बता दिया हाइड्रो हीलर एक और Actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Important one. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life ये here in the fortress. इसमें As for your French work, word there'll बोलते be हैं someone else to guide you through the details. मेरे में हिंदी नहीं बोलते थे सेंटेंसेस ये I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited.
Our free meals are actually pretty good here. तो जो फ्री वाली इतनी अच्छी होती है, पेड़ कितने अच्छे होते होंगे। ऐसा लगता है इन पंखों के पीछे जा सकते इधर है क्या? ओ मिल गया चेस्ट। Unsolicited, and all the more valuable for it. तेरे के ऊपर One man's stone. ये रैंडम चीजें कैसे मिलती हैं? मतलब उस जगह से रिलेटेड मिलनी चाहिए ना जहाँ से मिला है जस्ट वैसे। What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Nicolette made it sound like living conditions in the Fortress of Meropide तो काम नहीं wasn't करना very पड़ रहा है good. ना। Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. अच्छा ये It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals get to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure! Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? He seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sijuin. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products ये for लिए तो official 5 use, and घंटे some essential goods have to be obtained from भाई the साहब overworld, so we naturally have to stay in seriously touch about this and that. Monsieur Nouvelette's ये character is ओ unimpeachable. नो No matter कोई the बात नहीं मैं question, आराम you से can करूँगा भाई discuss it openly and freely with him. Talking अभी with मैं him थक गया तो मैं feels कैंसिल करके quite बाद बंद effortless. करूँगा In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect. ऐसे भाई 2 महीने 1.5 महीने के ब्रेक के बाद एक Now, तो I'm आपको treating क्वेस्ट you आती है two as guests आराम से करनी invited चाहिए by टू बी Monsieur ऑनेस्ट Nouvelette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. You're very welcome. Well, your new life awaits. अब हम जाएंगे मजदूरी पे। जाना कहाँ है तो ये बैंक पता नहीं चलता। रिटर्न टू हायर हमने वो भी अनलॉक नहीं किया टेलीपोर्ट वे पॉइंट बॉय का। भाई मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि मुझे 4 घंटे लगे। ओके भाई फिर मुझे भी 4 घंटे लगने चिंता मत करो। फिर मैं भी अपना पेशेंस ब्रेक करके फिर टैप 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 बकवास बकवास। अरे है एक तो लिफ्ट बुलाओ वापस तब बुरा लगता है मुझे ये।
आ भी रही है ये, मैंने क्लिक किया था ना। वो नीचे आ रही है, वो महंगा इतने धीरे धीरे से आ रही है वो। It's been over 84 years. Quake. मैं टेलीपोर्ट वे पॉइंट भूल गया अनलॉक करना ऊपर जाके। Crumble. Quake. दो पुराने में मैं पहले टेलीपोर्ट वे पॉइंट अनलॉक करके आऊं। व्हाट? शाबाश शाबाश। नहीं, मैं दूसरी लिफ्ट पे चला गया जहां से हम नीचे आए थे। मेन लिफ्ट में चला गया मैं गलती से, वो मैंने लॉक कर रखा है ऊपर, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। बड़ा मुझे लगा कोई और सा टेलीपोर्ट वे पॉइंट अनलॉक करना पड़ेगा। Traveler and Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. पानी टपक रहा है, पूरे प्रिजन वाली वाइब है। So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke Okay, bye. Good night. Bye. directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Novelette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Novelette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? क्या रिडली को? रिडली को तो पक्का बता रहे थे। Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Yeah, you're right. It's not like we can go back to Novelette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Novelette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. You mean... Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh?
magician's prop. Lenny must have left it. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. I told them everything. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe? Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! मम्मी ये मेरी पैर पे लग गई। ये क्या कुत्ता है ये ब्रांड इसके पास का ऑप्शन कैसा आ रहा है फिर में हवा अलग निकलती है ना बिलीव इन द पावर ऑफ स्केप्टिसिज्म जी तो उधर दोगे तो एक और ले लेंगे ओहो तब हम खरीद सकते होंगे इधर से वो एग्जैक्टली देख रहे हो कूपन लग रहे हैं क्रेडिट कूपन से यहाँ पे चीजें खरीदने में कुछ बंदे से उसके बगल वाला Grab yourself a welcome meal. वो कहाँ है लड़ने वाली जगह मैं सोच रहा हूँ वो रही अच्छा यही लड़ने वाली जगह है और ये तो बहुत है यार ये और देख लेते हैं हम प्रोडक्शन जोन कहते हैं